morning, Sat Sri Akal, Adab, Namaskar to everybody. Good morning. I hope everybody is fine and fit. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, and let me start with wishing you all happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. Happy Independence Day to all. Happy Independence Day. Happy Independence Day, ma'am. We have today we have chief guest, our own MD, Miss Jhankana Desai, जिनको हम प्यार से जेडी बोलते हैं. She's there with us, and we have Rakesh, we have Abhijit, we have Abdul here, and your supervisors, team leaders, QC, everybody is present here along with you. So let's start with the national anthem. National anthem के लिए आप सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज. अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सबको एक साथ गाना है. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. राम सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे वंदे. Now I would request JD for a small speech, like हमको inspire करने के लिए वो कुछ बोलें. Over to you, JD. Thank you, Rashmi. Thank you very much. Thank you for organizing this event today. And thank you all for coming here. I also want to congratulate all of you on the launch of your own channel, YouTube channel, called for which Rashmi has organized for all of us, the Kesav YouTube channel. Okay. Now the launch of this channel marks a very important milestone in our history, because we have been getting together and doing this cultural events together in our office for a long time, since the time we've been in existence. 2008 से कर रहे हैं हम सारे cultural events, पर हम लोग in the current scenario एक साथ मिलके बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते खुल के सामने सामने बैठ के, और कुछ प्रोग्राम तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल, बिकॉज ट्रेनिंग भी हमारी जूम पे होती है. तो हम क्या करें टू गेट सम रिलीफ from the stress of your day-to-day work pressure, sales का pressure, जो आपके team leaders और supervisors आपको दिन भर देते होंगे. So this channel gives you the freedom from all of that. It gives you a break. So the launch of this channel also marks a very important milestone. It marks the freedom
from the confines of our classrooms, of our workspaces, and a predefined culture that we used to have so far. You know, any kind of a setup, closed setup, it gives us freedom from that. You know, you're free to express and showcase your talent from your own space, in your own way, you know, without having to compete for time, space, etc. I would actually like to call this a Freedom Channel, Rashmi, because it is launched on Independence Day, and I see it as a medium for our people to channelize their positive energies and positive talent, showcase their positive talent to not just Kesarvians but to the entire world, and bond at the same time. So let us celebrate this Freedom Channel, this our own Kesarvians YouTube channel, where you can express, articulate, and indulge yourselves from your own home and still come together and bond together through these events and activities. अपनी हुनर दिखा सकते हैं वहाँ वो प्लेटफॉर्म पे, एंड ये आपको मतलब ये प्लेटफॉर्म में जरूरी नहीं है कि आप एक साथ एक ही फिजिकल स्पेस में खड़े हो या बैठे हो एक दूसरे के साथ. आप कहीं पे भी अपने अपने घर से या रास्ते पे से, किसी ने अभी कौन था, हरीश था शायद, जिन्होंने हमें रास्ते में से ज्वाइन किया, वो कहीं वॉक कर रहा था एंड ही जॉइंड अस. सो इट गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ अ फ्रीडम to join events from anywhere and everywhere and showcase your talent. So somewhere and our roads have become less congested. So somewhere there is this I see nature as a force trying to bring things into the rhythm, in tandem. Though obviously we don't appreciate all the lives that are being lost, all the people who are suffering due to this tragedy. I mean, obviously that's a very, very sad thing, but imagine the animals who were getting deprived of the forest cover and they didn't have homes for themselves. The birds who were unable to build a nest for themselves, and their numbers were dropping day on day basis. And somehow nature is now trying to put us in their place, push us in their place, and give more space to nature. But how can you remain bogged down by what is happening around us or with us? And what will happen if we stay bogged down? We will just go further down. We will just go further down into more negativity, more depression. And what is the outcome of all of that? Who knows? But if we instead look for freedom from negative thoughts and try and look at the positive side, look at somebody who is worse off than us. Look at somebody, if you're feeling bad about your job, look at somebody who doesn't have a job. If you're feeling bad about your salary, look at those people who've been laid off and do not have salaries to pay. If you feel that somebody in your family has been impacted by COVID, and then look at somebody who has lost a family member because of COVID. So look for small things that give you hope, that pull you out of despair from these trying times. And I know that what you are going through, हम कितना भी आपको consolation दे, हम वो आपका दुख ले नहीं सकते. वो तो जो आदमी का फैमिली मेंबर इम्पैक्ट होता है, बीमार होता है या कुछ होता है, वो ही समझ सकता है उसका दुख. बट मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि इसका पॉजिटिव साइड आप देखना शुरू करें, क्योंकि वो जो हो रहा है और हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते. बदल सकते हैं क्या? राइट? What has happened cannot be changed. It cannot be. Time कभी वापस नहीं ला सकते. Positive outcome चाहिए अगर हमें, तो हमें positive thought का बीज बोना पड़ेगा.
जैसे आप खेत में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं तो अच्छे रोज प्लांट्स उग रहे हैं, पर नीचे वो वीड्स उगते हैं ना, वो जंगली घास जिसको वीड्स बोलते हैं, वो उगता रहता है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे वीड्स निकाल देते हैं ताकि रोज प्लांट अच्छे से दिखे। सिमिलरली योर नेगेटिव थॉट्स आर दोज वीड्स, वो जंगली घास है जिसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है, या तब जाके रोज ज्यादा खिलेगा, सारा खद रोज को मिलेगा और एक के बदले अनेक रोजेस खिलेंगे वो झाड़ पे। बट वीड्स जब तक आप रहने देंगे तो क्या होगा, सारा पानी, खद, ये सब जंगली घास ही खा लेता है और वो बड़ा हो जाता है और रोज का पौधा मर जाता है वहां पे। ठीक है, सो अगर अपनी सिचुएशन में हम ये चीज अप्लाई करें तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? आप सोचिए कि ये फ्रीडम जो हमें मिली है वो क्या इंडिया में पहले कभी मिल सकती थी? कोविड से पहले क्या ये पॉसिबल था कि ये लड़कियां घर में बैठ के काम करें? उनको घर में कितना प्रेशर रहता है, बच्चे रहते हैं, घर का काम रहता है, कितना कुछ रहता है। वो सब सुबह 5 बजे उठ के, मुझे पता है, आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ आवर गर्ल्स, 5 बजे उठ के वो कपड़े धोती थी। एक सुपरवाइजर थी हमारी, हिना, शी यूज्ड टू वेक अप एट 5, वो कपड़े धोती थी पूरे फैमिली के, जॉइंट फैमिली था। फिर वो खाना बनाती थी सबका, बेटी का डब्बा बनाती थी, फिर बेटी को उठाती थी, उसको तैयार करती थी, स्कूल बस तक छोड़ती थी, और फिर 8 बजे, 7:30 या 8 बजे वो ट्रेन लेके ऑफिस आती थी क्योंकि दूर से आती थी। अभी आप सोचो, वही लड़की को इमेजिन करो, हीना को, इन द सेम सिचुएशन इन द करंट डे, जब वो घर से काम करेंगे, क्या उसे 5 बजे उठने की जरूरत है या वो 4:30 को उठती थी? व्हाटएवर, वो 6, 6:30 को उठेगी आराम से तो भी उसका काम हो सकता है, उसको वो घाई भागा दौड़ी ये सब नहीं करनी पड़ेगी। इफ वी do what is expected of us, if we deliver what is expected of us with integrity, then there could not be a better situation than this, and you will even get better results. मुझे तो better results मिल रहे हैं क्योंकि मुझे stress नहीं है रोज ऑफिस जाने का, भागने का, है ना, लोगों को जवाब देने का 10 बार रास्ते में, फिर भाग भाग के आओ, घर में वो बेटी को देखने के लिए कोई नहीं, उसका टाइम हो गया तो वो चली गई, मेरा मीटिंग में लेट हो गया तो मैं फोन करके चेक कर रही हूँ वो कहाँ है, नीचे खेल रही है बच्चों के साथ कि वो बाइक किसी के घर में छोड़ के गई। ये सब प्रेशर नहीं है ना मुझे। आई एम श्योर आई कैन रिलेट टू यू, आप लोगों को भी वैसा कोई तो प्रेशर होगा, हर एक को, जो अभी नहीं है करंट सिचुएशन में, है ना। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। Just you need to look for that and pick it up and make something of it. So let us mark this day as a freedom from negative thoughts. Even if you get just one thought, negative thought in the day, try to push that away and replace it with a positive thought. See, initially it is not easy. Okay, see, and it's easy to advise. So I will not advise you. I will tell you what I am doing. Yeah, I will share my own experience. So initially it's very hard. What do? You become aware. Awareness is the first step. Right? To become aware that you are getting a negative thought and immediately try to replace it with a positive thought. Yeah. So if I'm thinking, oh my God, this client is going to shut down now, what do I do? This is going to be bad. How many people will I lay off? So how will I overcome? How will I tell everyone? So instead of thinking like this, let me think, okay, this client has a situation. The entertainment parks are not going to open anytime soon. There is no choice that this client has. He's not doing it out of his own free will. He's doing it out of his circumstances. So more power to the client. Wish him luck. Bless the client. Can I look at somebody else? Okay, which sector is doing well right now? E-commerce, FMCG, probably to some extent all these insurance, DMAT, etc. So can we go and talk to these clients and ask them to either increase the number of seats or get some more work
from the existing clients? Can I go back to somebody and say, okay, we are doing well with 10 people. Can I bring it to 11 now or 15 now? You know, so first thing is to become aware. Second thing is to change that situation, polarize it from negative to positive, and then look at the good things. And I'm thinking, okay, all these days I did not have time to spend with my family. Okay, so what if I can't go back to office? I didn't have time to spend with my family. Now at least I see them every day. Though I might be at my workplace, my desktop, my daughter can see me. And that itself is a big thing for her, though I'm not interacting with her so much. And I'm busy with my work, but at least she can see me. At least I can go down and see who are the people who live in my building. So far, I did not even know the people who used to live in my building. Isn't it? So try and look for those small things. So far, I did not know who were the security guards who were servicing us. You know, I did not know who was the housekeeping person who was servicing the building. Can I go and develop a relationship with them? Can I support them in some way? Can I go for a walk? You know, pick up one aspect of your life and try to change it. Yeah. Try to create a positive change in one aspect of your life, and that will give you that much needed confidence as well as the inspiration to keep progressing and keep pursuing this path of positivity. आप सबको देख के इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत दिन हो गए थे किसी को देखा नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम श्योर आप लोगों को भी उतनी ही खुशी हो रही होगी. हमें एक दिले बात किया और किसी ने सेल्स के बारे में बात नहीं किया और किसी ने स्टॉक टाइम और रैप टाइम के बारे में बात नहीं किया. हाँ, हम वो हटके दैट आई लीव फॉर सम अदर डे. ओके, ठीक है. सो आई थिंक मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट लेट अस ऑल वर्क इन आवर ओन वे टू रिस्टोर नेचर, कीप नेचर इंटैक्ट. अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे और एक दूसरे को पॉजिटिव रखने में भी मदद करेंगे. Yes, ma'am. Here. How is the Josh? Hi, sir. Ma'am. Hi, ma'am. How is the Josh? Hi, ma'am. और जोर से. Hi, bro. How is the Josh? क्या यार, कितने ठंडे हो तुम लोग यार. घर में रह के शर्मा रहे हैं तुम लोग. बोलो जोर से बोलो. इसीलिए शर्मा रहे हैं. How is the Josh? Guys, how is the Josh? Yes, ma'am. तो क्यों शर्मा रहे हो? Thank you so much, Didi, for your inspiration. And thank you so much, Rakesh, Abhijit, and all for giving us time. Varun and all support staff and everybody for giving us this opportunity to host this. So, Josh is very high for Kesavians. I think this is the first time that we have somewhere around 400 people joining for celebration, and it's a positive sign for us. हम काम के साथ celebration भी जानते हैं, and the same way हम आगे के celebration भी इसी तरह celebrate करेंगे, आगे के events भी हम इसी तरह celebrate करेंगे. I have planned so many things. As JD said कि we have launched our YouTube channel also. तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है. जब आपको लगे थोड़ा टेंशन हो रहा है तो आप जाकर के हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा. And think positive, which is the best medicine in current scenario. सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही एक बहुत अच्छी मेडिसिन है. कंट्रीब्यूट भी करिए चैनल पे with your acts or anything that you think is positive and creative. Okay, thank you all. Have a great day. Guys, happy Independence Day to you, and thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, and Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Thank you so much.